हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे आदि। और मैं हूँ आरजे सौम्या। और हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिल्मी कीड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पहले एपिसोड में भी देखा होगा, दिस शो इज ऑल अबाउट कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट गुड मूवीज, गुड टीवी सीरीज। एंड इस शो के थ्रू हम आपके पास लेकर आते हैं अलग अलग किस्म के आर्टिस्ट। और आज के जो आर्टिस्ट हैं, इन्होंने भारतीय सिनेमा के ऊपर बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला है। एंड एज यू गेस्ड इट राइट, सौम्या, आप बताना चाहेंगे आज के आर्टिस्ट कौन है? वैसे तो उन्होंने गेस किया होगा। यस, डेफिनेटली द डायरेक्टर जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, दैट इज अनुराग कश्यप। एंड दोस्तों, अनुराग कश्यप के बारे में बात करने के लिए वी ऑल्सो हैव अ सरप्राइज फॉर यू। वी हैव अ फ्रेंड अमंगस्ट अस, जो कि खुद एक बहुत बड़े आई वुड से सिनेमा लवर है, और अनुराग का काम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर अरविंद टी अमंगस्ट अस। So, hi Arvind, and welcome to Filmy Kida. So, Dost, why don't Hi, you bro. start us off with this amazing discussion about one of your favorite directors, if I'm right? Yeah, so I must say, he is one of my favorites. And the first memory I have of Anurag Kashyap is probably when I've seen Gangs of Wasseypur. And I was like very young, probably like in my intermediate those days when I saw. And the first impression I've probably had of Gangs of Wasseypur is that it's a direct line to that gangster world which is shown in Western films. And इससे हम लोगों को पता चलता है कि where his inspiration comes from. And it's not just True. his knowledge is not just limited to Indian cinema, but also from many Western counterparts, and also films like Goodfellas and Godfather, from where he draws his inspiration from. And you He know, in you fact yeah, sorry, he in fact he himself said कि मतलब he was pursuing his zoology का degree, but Mhm. उन्होंने एक मूवी देखी थी बाइसिकल थीव्स, 1940s की बहुत पुरानी इटालियन मूवी है। उन्होंने वो मूवी देखी एंड ही गॉट सो इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवी, ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड वो बॉम्बे आ गए फिल्म मेकिंग में। तो उनकी इंस्पिरेशनल मूवी, ही कोट्स दैट his वन एज bicycle वन। thieves. And like he said कि वो फिल्म देखी मैंने, एंड पता नहीं एक रात के अंदर ही took that decision कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हंसराज कॉलेज से he was studying something, I guess, zoology as you said, and he Mhm. shifted base entirely to Bombay, had no proper contacts कि कहाँ रहूंगा कहाँ नहीं रहूंगा, and he said कि यार मैं तो लोगों अपने दोस्तों की पहले दोस्तों ने रखना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जब दोस्तों के ऊपर बर्डन बनने लगा तो मैं उनके घर के अपार्टमेंट की छत पे जाके रह लेता था या वो कर लेता था। And that was the time when he was hanging around Prithvi Theatre. One interesting thing that he said was कि uh, we have this हमें लगता है यार बॉम्बे जाते ही सब चीजें अचानक से दे फॉल इन प्लेस। सो ही सेज दैट इज नॉट द केस, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है सबको जबरदस्त तरीके से। एंड ही सेड कि वो पृथ्वी थिएटर के आसपास हैंग आउट करते हैं। हाउ ही गॉट और व्हाट ही गॉट नोन फॉर वाज कि यार ये एक बंदा है जो बहुत जल्दी आपके हैंड राइटिंग कर देता है, स्क्रिप्ट्स की बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे पेज लिख देता है। सो दीज डेली सोप्स, इनके लिए ड्यूरेशन इज नॉट एन मतलब इनके लिए कंटेंट इतना ज्यादा जरूरी नहीं जितना ड्यूरेशन होता है। सो ही स्टार्टेड राइटिंग ऑल दोस, फेयरिंग ऑल दोस नोट्स, and then slowly he started tweaking those scripts also, and eventually got discovered by, I guess it was RGV, and then Satya happened and Yeah. everything. So Arvind, like going back to what you said ki yaar he portrays the criminal world, and Mhm. like the world which is as it is, it's he does it very very uh, beautifully, I would say. जैसा है वैसा ही है। Yeah. And the thing with portraying bad characters is that it's very difficult to portray bad characters firstly on screen with truth. It's probably easy to portray good characters, but it is slightly difficult to portray bad characters, because when you're directing a film or when you're writing a script, you're supposed to look at a character very objectively. Like character को judge Hmm. नहीं करना चाहिए. हर film maker बोलता है मैं character को judge नहीं करूँगा, but it is that judging part comes in play when you are actually directing a bad character. But Yes. the speciality with Anurag Kashyap is that all his characters are gray characters. They're not black, they're not white. They fall into that gray zone, and the point where we start to question ourselves when we start empathizing with the bad guy, and that really hits in the heart. Like how was he able to do this?
that is something only a master filmmaker can do. It is not so And easy to empathize with every character. And उसने खुद बताया, like Anurag has told in many interviews that his inspiration for making good characters is from life itself and not from films, like from what he has read. And we all know that he belongs to a very small town, and his main source of knowledge was books. Like he used to read and he used to travel the world through those books. So when he read those characters in those books and he started to identify truth with all those characters, it directly translates to the kind of films he makes. And उनका ये बहुत बड़ा speciality है. And we see that in all his films, not just in Gangs of Wasseypur. We see that in Ugly, where yeah, Ugly mein he portrays greed of every character. Like every character in that film is greedy, is driven but by when their own personal motives. it's driven by personal motives and greed. And yeah, that is Ugly is also one of his landmark films. I feel that should have gotten more visibility, and now we are glad that it is on to OTT platforms and it is getting more visibility, because if it was on theater it would have been a completely different thing. Yeah, And I उन्होंने think मतलब ये खुद ही बोला था, मतलब if we see all his movies, उन्होंने खुद ये चीज बोली थी कि I wasn't born to make dreamy films, and that is something which is very evident in all his movies. So, and it's not a Adi is the proper same. tinsel town ka story that he portrays. He portrays it, and sometimes I would say that I am both uh, intrigued by his films was कि यार because of this reality of it, क्योंकि characters like this actually exist in the real world. You see Gangs of Wasseypur. Gangs of Wasseypur, what he flawlessly did was in just a matter of 5.5 hours, he was able to प्रॉपर तरीके से एक क्राइम फैमिली, उसकी 3 जनरेशंस, उनके क्या झगड़े चल रहे हैं, उनका पूरा का पूरा एक तरीके से यूनिवर्स ही वाज एबल टू पोर्ट्रे इट वेरी ब्यूटीफुली. एंड ही सेज कि यार लोगों ने पूछा कि आप हाउ आर यू इंस्पायर्ड और वेयर डिड यू लुक फॉर इंस्पिरेशन. सो ही सेड कि आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय हाउ गॉडफादर पोर्ट्रेड द स्टोरी ऑफ 3 जनरेशंस through the work done by Coppola. So he said कि मैं वैसा कुछ करना चाहता था, and I would say that he did it flawlessly. Gangs of Wasseypur कितना बड़ी cult classic है, तो ये तो सबको पता ही है. And so guys, I was curious, what do you guys think about his style or his technique, if you were to talk about that? So one thing I think that I've noticed in common in most his movies is कि वो जो ऐसे एकदम quintessential glamorous actors हैं industry में, वो उनको नहीं choose करता. He chooses people on the basis of how raw their acting is. Like if you see Nawaz, Manoj Bajpayee, Richa Chadda, Huma Qureshi, all these Pankaj people are Tripathi. जिनकी, Pankaj Tripathi of course. तो मतलब इनको पता है कि उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा रॉ और इतनी ऐसे अनएडिटेड लगती है ना ऑन स्क्रीन, उनका प्रेजेंस इतना परफेक्ट है, तो वो उस हिसाब से कैरेक्टर्स को चूज करता है. एंड अगर उस या अरविंद. And also, what I feel is that he chooses people who are from a theater background and not just from a film background, because जो थिएटर में लोग काम करके आते हैं, they have the proper sense of acting and like उनके पास स्किल होता है, उन लोग इतना वर्क एक्सपीरियंस से आते हैं कि it turns out to be great on film, because theater is comparatively difficult than when compared to acting in front of camera. That is one thing. I think a lot of his stories and what we see in his movies is essentially the essence of his struggle also. So he says कि यार जब मैं गुलाल बना रहा था तो मेरे पास में इतना कम बजट था कि मैंने जो एक्टर्स हैं and it had a good star cast, तो वो एक्टर्स को मैंने I could not make ensure कि वो एक 5-star होटल में स्टे कर रहे हैं, फिर हम आराम से लेजरली शूटिंग करें. He said मेरे पास में 5 वॉल्वो बस थी, मैं रात को लोगों को उसके अंदर डालता था. We used to travel to the next location. वहां पे we used to have lunch, dinner करना है आपको. There are packed biryanis, and then that's how next location पे उतरेंगे, lunch करेंगे, shooting करेंगे. Because he said, and it is a very मतलब मेरे को बहुत गजब बात लगी बोलने के लिए. He said, आप लोग आओगे, you spend your 100, 200, 500 bucks to watch my movie. I cannot stand out of the theater and tell to each person, यार सुन मेरा बजट थोड़ा कम था, वो वाले सीन में थोड़ी VFX की गलती है, वो वाले सीन में थोड़ी एक्टिंग कम हो रह गई है, या मैंने उसका रीटेक नहीं ले पाया. He said that, and वही बोल के he says कि यार अगले फिल्म मेकर्स के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, हमारे जमाने में तो कुछ होता नहीं था. Not that his जमाना was very very far off, but he says कि iPhone के अंदर 4K कैमरा आने लग गया आजकल. अगर फिल्म बनानी है
So there's not going to be some Akashvani or something. Just start making it. What's stopping you? You are wo. Yeah. And like any personal qualities of him that you like or can see in his movies. So there are many, dude, in fact, but the high order bit I feel is that one thing is his sense of vision, his sense of color. That is one thing which is extremely good because across his films, his color palette varies. Abhi Gangs of Wasseypur, the minute you see that film, it creates a kind of a dusty and a countryside environment, and you get that feel of sticking in a countryside. But जब तू अगली देखेगा, it is completely contrasting. But when you It's talk about dark, other films, urbanesque darkness type की कुछ, yes. You get the and vibe of the movie from the kind of visual scene that's in it. yeah, and also very strong female characters in his films who are self-empowering, and you know, जो like there is a difference between a role and a character. Character को लिखा जाता है and एक character को एक background होता है, and all those things are done. So I feel his female characters are portrayed perfectly in across all his films. जैसे पिंक की नो मीन्स नो तो बाद में आई थी, उससे पहले हुमा कुरैशी ने मोहसिना हमीद बन के बोल दिया था परमिशन नहीं लिए आप, तो उसमें उसने कंसेंट का पूरा पाढ़ा पढ़ा दिया उसमें. एंड एक और बात मतलब जो कि बहुत ही क्विंटेसेंशियल अनुराग कश्यप चीज है उसकी मूवीज में इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट ही यूजेस इन हिज मूवीज. ही नोज कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसकी मूवीज नहीं देख पाएगा एंड उसकी व्यूअरशिप उस वजह से कम होगी, बट ही इज नॉट इवन अपॉलोजेटिक बिकॉज ऑफ दैट. ही अनअबैशेडली ही सेज कि आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, आई डोंट हैव टू बी डिप्लोमैटिक इन एनी सिचुएशन, आई एम व्हाट आई एम एंड आई विल मेक मूवीज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. तो एंड मतलब दैट इज द वन थिंग दैट आई रियली लाइक इन हिज मूवीज. आदि व्हाट अबाउट यू, व्हाट तुझे कौन क्या चीज पसंद है उनकी मूवीज में? As you said, Soumya, the first तो जो language वाला part, and see, I cannot expect कि कोई अगर मैं बिहार के हिंटरलैंड की कोई कहानी दिखा रहा हूँ और वो बंदे गाली नहीं देते होंगे अपने डेली यूजेज में या ऐसे बात करते होंगे एकदम श्रीमान श्रीमती आप करके, तो that is hard to believe. So this happens, and that is why I respect him also. He shows us as it is. He also doesn't go overboard कि भाई बंदा हर चीज में फालतू में गाली दे रहा है या जहाँ पे क्रैश होने की जरूरत नहीं वहां पे भी वो कर रहा है. He is pretty nuanced in that is what I feel. Another thing that you asked ना यार सौम्य, एक और चीज थी Evan कि like if Gangs of Wasseypur was a story of Bihar, Gulal was a story of Rajasthan, Ugly was a story of urban India. He is able to pick up those very small subtleties. देहात की सटल्टीज कह लो उन्हें, अलग अलग जगह की. इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, हम तीनों का भी मतलब हम तीनों ने इतनी अलग अलग तरीके की सेटिंग्स देखी होगी. ही इज एबल टू कैप्चर दैट नुआंस वेरी वेल. इट वाज वेरी बिलीवेबल. गुलाल, पर्सनली आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई सॉ कि यार हाँ जो जैसा सेटिंग उसने दिखाया है या कुछ नुआंसेस कल्चरल वो मेरे को बहुत सही लगी. सो ही डेफिनेटली पुट्स इन अ गुड अमाउंट ऑफ, ही हैज एन आई फॉर डिटेल, जैसे हर डायरेक्टर को होती है. कल्चरली भी हिज फिल्म्स आर वेरी साउंड. And I think his cultural understanding also, it comes from a lot of research. And what I feel is that when filmmakers get into making a film, look, they start the process and they take a lot of time while shooting a film. But he spends a lot of time in research, and when he gets to a film, he shoots it in 1 month. Like he knows exactly what he's doing. He has shot Raman Raghav in like 20 days, I guess. 20 days ka schedule. Shot everything in 20 days, start to end. And it's so amazing, like just like you said, how he picks cultural nuances. His understanding of region is absolutely amazing. And about the part where he uses a language, where he uses explicit language, I think a lot of filmmakers, they restrict their skill by not using it. And he goes out and out and he expresses himself completely, and he uses that to his advantage. And it's not just about explicit content in his films, but also the way he uses violence. And one thing is that violence it's a very human emotion, and it is shunned away by modern film, particularly in the Indian film industry, because of the censor board and everything. हम लोगों को पता भी है कि उसके बहुत सारे फिल्म्स बैन भी हो गए थे because of the element of violence and the use of explicit content.
And there is also another interview of Kamal Hassan when people asked him about what is your opinion on violence. He said, we see violence every day. I mean, it is out there, and when we see violence every day, it's not surprising that it does not reflect in film. I think Anurag Kashyap ka bhi, his line of thought is that only, that violence is very normal. It's not, of course, not normal, but it is something which is very human. So, what do you guys think about his use of violence in films? I would ask सौम्या बताएगी ये तो ढंग से. यार मतलब इट्स ऑफ कोर्स इट्स हार्ड टू इमेजिन, क्योंकि जिस तरह के गांव में, जिस तरह के फिजिकल एनवायरनमेंट में वो मूवी बना रहा है, अगर हम कल को जाके देखें उसी जगह पे, तो इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन कि वहाँ के लोग इस तरह से नहीं बात करेंगे, इस तरह से नहीं लड़ रहे होंगे. एंड सिंस not a lot of directors are making movies on it, someone has to, and no one would be a better person than him, I think. So yeah, that's about. I think yaar, you know, as Soumya said also कि see, हर फिल्म मेकर का गोल एक अल्टीमेट होता है to show what he really wants to show. हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था, people make those movies that they really want to make, especially these breed of people. And second thing is, if every director had a code कि यार उसके अकॉर्डिंग मैं एक मूवी बनाता हूँ, for Anurag Kashyap I guess it would be honest कि भाई जो जैसा है, and even जहाँ पे जो जैसा नहीं है, जहाँ पे हाँ रॉ, बिल्कुल जो जैसा मैंने सोचा है, मेरे दिमाग में जो ऑनेस्टी है उनके प्रति, वो मैं उसके लिए जो भी दिखाना जरूरी है, चाहे वो गाली गलौच हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो जो भी चीजें हो, I guess he's gonna show it. And you know, एक बहुत we should ask our viewers also कि उनका क्या कहना है इस बारे में. तो दोस्तों जो भी आपका कहना है इस बारे में, प्लीज हमारे कमेंट्स के अंदर उसे जरूर लिखिएगा. And yeah guys, any closing notes? Just really would like to thank you, Arvind, because of course you brought in a dimension even we have not discussed before. Yes, my pleasure, my pleasure. Thank you so much, Arvind, and thank you so much to all our viewers, and we hope to see you next week again with yet another show and yet another new director. Yet another new director. Yeah. Okay, bye bye guys.